140 opportunities that she has played for India, and both these players have gone out of the field and they have been replaced thanks to the rolling substitution. And Vandana Kataria near the goal line is being actually warned by the umpire that they really can't be harassing one another and try to play a clean game at the moment. Amber Church, the New Zealand umpire. Vandana playing it now back on the way, looking in for Rani Rampal. Rani Rampal, who plays in once again back to Kataria. Good wall pass being orchestrated by the two players. A give and go situation, but stolen on very well. Julieta Jankas tries to bring it over, and a hustle and bustle between the two players who really had a little bit of an interception right there. Victoria Granato was the last player to touch that ball, and there is the hooter, the signal that the first quarter has gone down, and the Indian team has really bounced back and caught the world number 2 side, Argentina, on their back foot and are leading 1-0. Let's tell you, the tenacity of these Argentinian women is the fact that in the World Cup, they were gold medalists in 2012 in Perth, in 2010 in Rosario, in their own hometown. And as far as Olympics are concerned, they were the silver medalist in Sydney. And then, of course, also the silver medalist in the 2012 edition in the London Olympics. Won the bronze twice in 2004 and 2008. And the reason for everyone probably in India to celebrate was the same way, Gajendra, as they did yesterday. The Indian team also went into the lead against Belgium. It's not how you start. Well begun is only half done. It isn't over till that final hooter. You have to cross the finish line in a professional way. And the only difference, talent-wise, I believe the Indian men in the hockey side were far better. Their first touches had improved. Their strength was good. Their skills were absolutely brilliant. But the tactical play, the wisdom of what really is convincing the referee to give fouls in their way is what really was the difference between the two sides yesterday. The same thing is here again today. The Argentinian women are professional players, play on the Pro League, in the Pan American Games, many of them play in the European League, and they are used to high pressure and know exactly what it is known as the mental awareness, the tactical awareness of what to do, when to do, and how to do to convince the referee to blow the whistle in their favor. निश्चित रूप से सुजोय, और ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बार फिर से दूसरे क्वार्टर का खेल शुरू हो चुका है और भारत के पास गेंद है। भारत के खिलाड़ी उसे लेकर बैक पास देना चाहते थे अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन अर्जेंटीना ने गेंद को छीना। लेकिन एक बार फिर से भारत के ही पास गेंद दोबारा आ गई है और मोनिका ने गेंद को ड्रिबल करते हुए बाईं तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वहां 3 खिलाड़ी अर्जेंटीना के वहां सफल नहीं हो सके, इसलिए उसे क्लियर किया, बैक पास दिया अपने ही साथी खिलाड़ी को अपने क्षेत्र में। एक बार फिर से दाहिनी तरफ से आक्रमण बनाने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से। बहुत तेज खूबसूरत पुश दिया था, तेज ताकत के साथ दिया था, जो कि अर्जेंटीना के क्षेत्र में 25 गज की रेखा के पास वो गेंद पहुंची थी, लेकिन वहां पर अर्जेंटीना के ही खिलाड़ी के नियंत्रण में गेंद आई और इस तरह से अभी गेंद का पोजीशन जो है, गेंद नियंत्रण में है अर्जेंटीना के खिलाड़ी के पास। एक दूसरे को पास देते हुए पैरेलल पास, बैक पास, अभी बाईं तरफ अपने खिलाड़ी को पास दिया है और वो अटैक बनाने की कोशिश जरूर करेंगे और कर रहे हैं। स्कूप दिया भारत के क्षेत्र में, गेंद पहुंची वहां 25 गज की रेखा के पास भारत के क्षेत्र में, वहां पर अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने गेंद को नियंत्रित कर बिल्कुल डी के अंदर वो पहुंच गई थी, लेकिन वहां जिस तरह से बल्कि कोशिश की और वो सफल भी हुई अर्जेंटीना के खिलाड़ी, वहां उन्होंने गेंद को जिस तरह से पुश किया था भारतीय खिलाड़ी के पैरों से टकराया और इस तरह से गुरजीत, इस तरह से जो मुश्किल आई, ऑगस्टीना वहां पर थी और इस तरह से भारत के पैरों से टकराने की वजह से डी के अंदर पेनल्टी कॉर्नर जो है भारत को, अर्जेंटीना को मिला है। इस समय अंपायर ने तुरंत इशारा किया था और अब उसी की तैयारी, जो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कुछ सेकंड के लिए इसे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, अर्जेंटीना की टीम आपस में अपनी खिलाड़ियों के साथ करते हुए। ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर जो है अर्जेंटीना को, पहला दोनों टीमों को मिला पहले हाफ में, जिसको गोल में कन्वर्ट किया था भारत ने गुरजीत के माध्यम से, और ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर अर्जेंटीना को पुश किया।
डी के ऊपर रोका है उसे, अपने साथी खिलाड़ी को दिया था ड्रिबल करते हुए, चाहते थे वो उसे देना, लेकिन कोशिश ये नाकाम रही और बहुत खूबसूरती से। दरअसल मुझे लगता है सुजोय कि अभी कुछ जैसे संशय की स्थिति कि क्या करें कि उसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकल आए। वो हर चीज ट्राई करना चाहते हैं, डायरेक्ट हिट की बजाय वो उसे अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए उसे डिफ्लेक्ट करना चाहते थे, अलग से उसको हिट करना चाहते थे, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हुए और वो गेंद जो है साइडलाइन से होते हुए बाहर निकल गई थी। तो ये प्रयास जो था अर्जेंटीना का, जो कि दूसरे पेनल्टी कॉर्नर के रूप में मिला था, वो बेकार गया है। और जो भारत के ऊपर एक दबाव था, निश्चित रूप से था, वो दबाव, उसके खतरे जो मंडरा रहे थे वो हट गए हैं। भारत के पास गेंद, भारत अपने ही क्षेत्र में दूसरे खिलाड़ी को पैरेलल पास देते हुए, और इस समय भारतीय खिलाड़ी जो वहां पर मौजूद है, निकी के पास गेंद थी, बाईं तरफ से लेकर आगे बढ़ना चाहती थी वहां पर सलीमा ने गेंद को डी के अंदर पहुंचा दिया था। बिल्कुल गेंद भारतीय खिलाड़ी उसे नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने छीन लिया है गेंद को और क्लियर भी बहुत खूबसूरती से सफाई के साथ किया था। इस समय भारत के क्षेत्र में 25 गज की रेखा के पार बाईं तरफ से अर्जेंटीना के खिलाड़ी ड्रिबल करते हुए जगह बनाने की कोशिश, भारतीय रक्षा पंक्ति डी के अंदर पहुंच चुके हैं वो, लेकिन अकेले, और वहां से उन्होंने गेंद को हिट तो किया था, लेकिन ये कोशिश जो की थी सबिता ने अपने पैर से, वो बहुत कमाल की थी, लेकिन उसमें क्या कुछ हुआ इसको देखना बहुत और इसको समझना बहुत जरूरी है। भारत की खिलाड़ी वहां पर मौजूद थी जो उन्होंने उनके पैरों से, मेरा ख्याल है वो गेंद जिस तरह से टकराई थी स्लो मोशन में, ये साफ पता लगता है। This is exactly what I've been telling you. The ball has been hit on the Indian defender's legs deliberately by Rotario to take that penalty corner. This is what they have done yesterday against the team Belgium against Team India. And right now, this is going to be the third penalty corner, and taking that push will be Victoria again. And this time, Albertario fires, and she beats the Indian defense. And what a combination ball at the moment. They didn't go directly onto the penalties. And the penalty corner specialist for Argentina, since there are multiple players, and that is the reason why they went in wide, beat that Russia. The push was very good. The stop was incredibly good. And that stop coming in from Victoria Suarez, and the strikes taken over a hefty pass onto the side. Savita was leaning onto her left side with an outstretched leg, and the ball beating also Surjit went inside the backboard, and Argentina have now taken the lead. The score here at the Oi Stadium is Argentina 2, India 1. तो इस समय दोनों टीमें जो हैं, क्योंकि अब अर्जेंटीना की टीम भी अपना एक गोल करने के बाद बराबरी पर पहुंच चुकी है, तो निश्चित रूप से ये दूसरा क्वार्टर जो चल रहा है, एक बार फिर से अर्जेंटीना के पास गेंद दाहिनी तरफ, उन्होंने गेंद अपने साइड लाइन के पास खड़ी खिलाड़ी को देना चाहता, उन्होंने ड्रिबल करते हुए डी के पास पहुंचने की कोशिश वहां, लेकिन गेंद बाहर निकल गई बेस लाइन से होते हुए, और अंपायर का इशारा एक बार फिर से फ्री हिट भारत के लिए। भारत के खिलाड़ी निश्चित रूप से अभी जो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। नोएल ने जो एक बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया था गोल में, उसकी वजह से कैप्टन जो है उस टीम की, उनको ये क्रेडिट जाता है, उनको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने अर्जेंटीना की टीम को भी अब बराबरी पर ला खड़ा किया है, और इस बराबरी की प्रदर्शन से अब दोनों टीमों के लिए एक चुनौती जरूर खड़ी होगी, और दोनों टीमें, लेकिन एक बार निकी के पास गेंद, निकी दाहिनी तरफ से बहुत खूबसूरत छीनता, उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया और अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया, गेंद को आगे लेकर बढ़ना चाहती थी, लेकिन 25 गज की रेखा के पास अर्जेंटीना के खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को नियंत्रित किया और ड्रिबल करते हुए दो खिलाड़ियों को डॉस देते हुए, चकमा देते हुए अपने साथी खिलाड़ी को गेंद दे दिया। भारत के क्षेत्र में गेंद पहुंच चुकी है और डी के बाहर साइड लाइन के पास, लेकिन वहां मौजूद ग्रेस गेंद को नियंत्रित किया। Yes, at the moment, that goal earlier has been disallowed, and the scoreline is 1-1 still. So Noel is the only one who scored for Argentina, and that scoreline has to be corrected, and we do that right here, because a little bit more of an action that we could see, and it's very important that that goal which has been disallowed at the moment has been a little bit more of confusion, but the umpire signaling that the scoreline is still 1-1 over there, so that credit for that goal going to the captain Noel Barriavueno, and at the moment the scoreline still is India 1 and Argentina 1, and we were a little bit of anxious at the moment when we had thought that that goal had gone in,
But brilliant play once again from the Indian players who are now building up that goal opportunity on the near side. Siami in the central midfield position plays the ball back, looking in for Neha. Neha has been very good, and she's the one who had the presence of overlapping at the moment. And this time Salima on the right flank plays it. Rani Rampal in the middle, and that control really eluded. Rani Rampal could have gotten the ball, but Siami had to come in between. She tried to control, and she couldn't do that. And meanwhile, a counter-attack opportunity for Argentina on the near side, and that is Miguela Rutegui, who was coming over, couldn't control the ball. Many of these runners, in fact, run as if they are athletes with both their arms. They control the ball with only one of their hands and are really pumping iron as far as the flanks are concerned. And the Indian team is playing with a 4-4-2 formation, 4 defenders, 4 midfielders and 2 attackers. And 2 attackers are Siami and Rani Rampal at the moment. So the pressure is now also on Team India, because the pace with which the Argentinians are coming in their counter-attack is really, really commendable. सुजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और पहले भी जो आपने बात कही थी कि जिस तरह से कुछ एक टैक्टफुल खेलते हुए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना कि आपको पेनल्टी कॉर्नर जैसी चीजें मिलती हैं और आप बढ़त बनाने की कोशिश करते हैं, आप दूसरे को गलती करने के लिए आप रास्ता तैयार करते हैं और दूसरा जब गलती करता है तो उसका लाभ आपको मिलता है, और उसका लाभ अर्जेंटीना ने बिल्कुल साफ साफ लिया। जो दूसरा क्वार्टर चल रहा है उसमें उनको ये लाभ मिला था। एक बहुत बड़ा खतरा इस समय हो सकता था भारत के ऊपर, क्योंकि डी के अंदर अर्जेंटीना के खिलाड़ी उसे वहां पर मौजूद थे, उसे गेंद को अपने नियंत्रण में जानकॉन्स ने लेने की कोशिश ले चुकी थी और उसको हिट करना चाहती थी, लेकिन खुद वो नियंत्रित नहीं कर पाई अपने आप को। सविता ने वहां गेंद को क्लियर किया और इस तरह से ये खतरा जो भारत के डी पर मंडरा रहा था वो हट गया है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी IEPFA की सलाह, शिक्षित, जागरूक एवं सशक्त निवेशक बने। विस्तृत जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-114-667 पर आप जरूर कॉल कर सकते हैं। अर्जेंटीना और भारत के बीच ये सेमीफाइनल महिला हॉकी के लिए टोक्यो ओलंपिक खेलों में, और इस समय ये जो ओई स्टेडियम में नॉर्थ पिच पर मुकाबला चल रहा है उसमें दोनों टीमें यानी अर्जेंटीना और भारत दोनों टीमें जो है बराबरी पर दाहिनी तरफ से अटैक बनाने की, आक्रमण बनाने की कोशिश भारत की तरफ से। तेज हिट दिया था अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन अर्जेंटीना के पास गेंद पहुंच चुकी है। अर्जेंटीना भारत के क्षेत्र में ड्रिबल करते हुए उसे क्लियर करना, अपने बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को। एक बार फिर से बाईं तरफ साइड लाइन से होते हुए बिल्कुल पैरेलल, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन इतना मुश्किल था उस पास को जो आगे गेंद बढ़ाई थी उसको कंट्रोल करना, क्योंकि जब तक साथी खिलाड़ी कंट्रोल करते, नियंत्रित करते, तब तक गेंद साइड लाइन से होते हुए बाहर चली गई थी। फ्री हिट इन भारत को, और ये भारत की तरफ से गेंद एक बार फिर से भारत के नियंत्रण में दाहिनी तरफ से अटैक करने की कोशिश, लेकिन गेंद फिर से साइड लाइन से बाहर निकली थी। अर्जेंटीना के पास, अर्जेंटीना के नियंत्रण में गेंद पहुंची है, और ये दबाव दोनों टीमें एक दूसरे पर निश्चित रूप से महसूस कर रही हैं और आगे बढ़त बनाने की कोशिश कर रही हैं। अर्जेंटीना के पास अपने एक क्षेत्र में पैरेलल पास अपने दाहिनी तरफ मौजूद खिलाड़ी को उन्होंने दिया है, और वहां पर उसे टैकल करने के लिए भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं रक्षा पंक्ति के, इसीलिए बैक पास देना पड़ा। बैक पास देकर स्पेस बनाया, फिर से बैक पास अपने ही साथी खिलाड़ी को, क्योंकि 25 गज की रेखा और मध्य रेखा के बीच में ये खेल आगे बढ़ाने की कोशिश, गेंद को क्लियर करने की कोशिश जरूर कर रही थे वहां पर अर्जेंटीना के खिलाड़ी, लेकिन वो उसमें अभी भी गेंद को बहुत आगे तक लेकर पहुंच नहीं पाई हैं। सुजय, Well, yes, 1-1 the score line, 50-50 possession. The Indian team has really clawed back, and they have really tried their best at the moment. And as long as this possession for the Argentinian players is going to be in their midfield, India would not have a problem with that. But then once again, on the far side, running on with a great amount of speed is Agustina Albertario. Albertario trying to force in and looking and trying to earn a penalty corner. They are not trying to score goals at the moment, because circle penetrations 9 in favor of Argentina, 4 in favor of India. And Grace Ika, wisely enough, using her experience, she's one of those experienced players who plays in for the Railways, 5'2" tall, 27 years of age. And she's really been at the center of the Indian defense. And once again, opportunity now, Eugenia with the ball. She's leaves the ball now and tries to play the ball to Agustina Alonso. Agustina plays it right in. The ball went inside the Indian goal. But since there was no hockey stick connected from the Argentinian player inside the shooting circle, this won't be a goal which is counted. The score line here,
for all those who have tuned in late to this live commentary coming to you from the Oi Stadium in Japan, the venue for the second semi-finals of the Olympic women's competition in hockey is India 1, Argentina 1. And at the back, the Argentinian central defender, Valentina Raposo, trying to play the ball. Good stealing once again from Salima. Salima plays to Rani Rampal. Rani Rampal crosses the dotted line, tries to enter the shooting area, but good defensive skills from the central defender, Valentina Raposo. She dispossesses Rani Rampal without giving away or conceding a foul, because that would have been dangerous. Gracika has moved in over, plays it now back to Rani Rampal, who's coming over. Salima enters inside the shooting circle on the left side. She's trying to struggle past two players, raises her hand, appealing for a penalty corner, and she gets it. The Indian team scored their first goal through a penalty corner, and this was Stex being moved in right and left from Salima, and Salima was being disturbed and hassled to and fro, and a good call coming in from the New Zealand umpire Amber Church. That first goal had come in through the penalty corner, and that was a brilliant strike by Gurjeet Kaur that had the defense and the goalkeeper of the Argentinian side, Belen Suchi, in an embarrassed position. Can Gurjeet fire again? Will lightning hilt twice here at the Oi Stadium in Japan? 1-1 the score, getting ready to push for the penalty corner. Once again, good opportunity. Gurjeet fires, and that was a close call. Brilliant save coming in from Belen Suchi. Gurjeet had a low shot, and the Argentinian number one, Belen Suchi, had a good opportunity to pow it out. Is that another penalty corner? The clearance going off the foot of the defender, Agustina Albertario. And whenever Albertario gets that ball, she really fires over. And Rosso also is being pulled up at the moment. She really tried to jump and get out of harm's way. And this will be now a second opportunity for Gurjeet and company. Will they go in for a combination? Will they go in and try something different? Because the rushers are anticipating that the penalty shot or the corner strike or the drag flick will be taken by Gurjeet Kaur. They have to do something else. निश्चित रूप से सुजय और पोजीशन ले चुके हैं, पुश के लिए बिल्कुल तैयार। और एक बार फिर से देखना है कि ये मिस किया है, वहां पर गेंद को नियंत्रित नहीं कर पाए, और इस तरह से एक बहुत खूबसूरत मौका था भारत के पास, लेकिन उसे वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए, उसका दबाव भी नहीं बना पाए, और इस तरह से। लेकिन इस बीच में एक और पेनल्टी कॉर्नर भारत के पक्ष में, जिस तरह से खतरनाक ढंग से अलोंसो ने गेंद को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी, बल्कि इस समय वो अंपायर के साथ बहस करते हुए इस बात के लिए, और अंपायर ने इशारा किया, खेल को रोका। शायद अंपायर इस बात पर नाराज हैं, वो गुस्से में हैं, इस बात की अभिव्यक्ति कर रही है, और इसीलिए टीम रेफरल दिया है। अर्जेंटीना की तरफ से इस बात की डिमांड की गई है, और अब वो टीम रेफरल, पहला टीम, मेरा ख्याल है एक ही टीम रेफरल होता है, और उसका ये मौका का फायदा उठाने की कोशिश करेगा अर्जेंटीना। Yes, the problem actually is this. They have been very good officials here. I must really appreciate them, because they said if you want to object, you have the right for a referral. Go for the referral. You do not have to argue with my call until unless you don't go up to the video referrals. And right now, Argentina have asked for this referral, and like we have seen before, and Janendra, you know that both the teams have only one referral apiece, and if it's rejected, they do not have the liberty of going for a referral in the entire game. So that is a very risky thing, and both Amber Church and Sarah Wilson, the umpires, have been very strict with this. If you want to appeal, if you want to question our judgment, go on and for the referral. Investor Education and Protection Fund Authority, IEPFA, suggests being an educated, empowered and smart investor. For more details, call on toll-free number 1-800-114-667. एक बात सुझाव जरूर है कि क्योंकि जिस तरह से लगातार ये तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला भारत को, अर्जेंटीना इस बात का बहुत दबाव महसूस कर रहा, और इसीलिए अर्जेंटीना के खिलाड़ी एम्पायर के साथ इतनी बहस और इतनी चर्चा कर रहे थे। और ये देखना है, अब ये भारत रेडी है, बिल्कुल पुश के लिए तैयार है। और ये आपको ये बता दें कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA की सलाह, शिक्षित, जागरूक और सशक्त निवेशक बने। विस्तृत जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800114667 पर कॉल करें। इस समय प्रतीक्षा निर्णय की
वीडियो अंपायर क्या निर्णय देते हैं इस बात की सबकी निगाहें भी उधर है, ध्यान भी उधर है, लेकिन चिंता की जो लकीरें हैं वो साफ नजर आ रही हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के चेहरे पर, क्योंकि लगातार 30 तीन पेनल्टी कॉर्नर मिलना और कहीं ना कहीं कभी ना कभी कन्वर्ट होने की स्थिति तो रहती है। और जिस तरह सुजय आप कह रहे थे, निश्चित रूप से कि इस समय चूंकि दोनों टीमें बहुत अच्छे से खेल रही हैं, बहुत अच्छे से डिफेंड कर रही हैं अपने गोल पोस्ट को, तो और अब निर्णय जो है वो उसकी प्रतीक्षा पूरी हो रही है। There's around 3 minutes and 53 seconds left in the second quarter, and the video referral and the judge are having a conversation with the on-field umpires. Amber Church and Sarah Wilson will have to do that, and there seems to have gone. The referral has been proved right, and New Zealand saved an opportunity to come up. And let's see what exactly a decision is she going to have. Sarah and Amber have a tough task because, like Belgium yesterday, Argentina is also a team that really puts the pressure on the umpires. That's their tactical advantage, and that's their maturity that they have. So it's going to be a sigh of relief for Carlos Rutegui, the coach of the Argentina side, because every time the Indians win a penalty corner, they practically know that danger is looming at the moment. Long scoop from defense, looking in for the attack line players. Marcela Rutegui plays it on, looking in, but then there's a foul and the Indian team tries to scoop it over. Siami tries to control the ball. A bad touch from her goes into the central midfielder, Francesca Hawk. And Francesca is trying to play that at the moment in a little bit more of purpose as she plays the ball from left to right and now goes in from the left position back once again and now is with Agustina Albertario. And Albertario has been one very clever, very mature, very professional and knows how to take fouls, and she's done that once again. She ran from the near side. She was sandwiched on either side by Siami and Navjot, and she didn't have any place to go. And she pushes the ball into Siami's position and tries to go in for Sushila's obstruction foul, claims it with a single hand. And there is the penalty corner now coming in favor of the Argentinian side. The pressure would be definitely on them. For a long time, Lionel Messi has now helped them win the Copa America. As far as football is concerned, now the hockey women, can they do it or not, is a question. Push coming in over, Albertario leaves it, and there is a good rushing opportunity, and Grace Ika really put that pressure on. A good clearance coming in from her. Playing it on the near side is the number 10, Maria Granato, who is 31 years of age, tries to win the ball back, giving the ball now with a little bit more of purpose. So now looking in for Maria once again. Maria almost playing as the central midfielder position, tries to connect a lot of those pivotal roles, plays it now onto the left-hand side for the left winger. Gracika struggling to keep up with the pace, and Gurjeet now comes in over and puts in a very crucial intervention. The ball now back with the Indian mid defender who's gone in close. Navjot is the player who's coming over. Good opportunity now. Plays into Rani Rampal. Rani Rampal is also clever. She's been one of the young players on the FIH radar for a long time. And she really uses her experience to every minute opportunity. And she comes in with a foul. Taken it out very early and very fast, but that's a missed pass now. A missed pass going in for Agustina Goranze, and she's been over. Gracika once again intercepts it brilliantly well, plays the ball long, and is that a carry forward foul given against the Argentinian midfielder? Yes, says the umpire, and this is now going to be Agustina who's going to be pulled up, and the Indian players will have possession as the clock is going to be running short here in the second quarter. The scoreline here is India 1, Argentina 1. And once again, good opportunity now. Rani Rampal in the center. She has an opportunity to take a shy on the goal, but intercepted well this time. There were 5 players in front of her. She had nowhere else to go, and a clever defensive tactics once again from the Argentinians. Plays it out in the center, but this time
Siami unable to control it. They have to get the players back into defense as the possession goes back into the Argentinian area. Number 7, Agustina Albertario, playing in now, moving in from the left now to the right position. Now praying it on a wide, long shot. Thankfully, Janendra, the ball has gone over the back line and the Indian girls can breathe a sigh of relief. Scoreline, India 1, Argentina 1. निश्चित रूप से दूसरे क्वार्टर का खेल जो बस कुछ ही क्षणों में खत्म होने वाला है और 15-15 मिनट के ये दो क्वार्टर जो कि अपने आप में भारतीय खिलाड़ी ने वहां पर लंबा स्कूप दिया है अपने साथी खिलाड़ी को। अर्जेंटीना के क्षेत्र में दाहिनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहां सलीमा ने गेंद को शर्मिला ने गेंद को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी, लेकिन अर्जेंटीना के खिलाड़ी वहां मौजूद थे। एक बार फिर से भारत के पास गेंद, नेहा वहां दाहिनी तरफ से बहुत खूबसूरती से उन्होंने गेंद को नियंत्रित किया, बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, पैरेलल पास साइडलाइन के साथ साथ वो देना चाहती थी सलीमा को, लेकिन सलीमा उसे नियंत्रित नहीं कर पाई क्योंकि बहुत कम जगह थी और वो साइडलाइन से होते हुए बाहर। और ये हूटर की आवाज इस बात का इशारा कि दूसरा क्वार्टर जो है वो खत्म हो चुका है। भारत और अर्जेंटीना दूसरा सेमीफाइनल खेल रहे हैं, यानी आज सुबह एक सेमीफाइनल जो संपन्न हुआ जिसमें ग्रेट ब्रिटेन को हराकर नीदरलैंड जो है उसने फाइनल में अपनी जगह बनाई है, और ये दूसरा सेमीफाइनल भारत और अर्जेंटीना। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि अभी तक करी है क्योंकि पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। और जिस तरह से भारत के खिलाड़ियों ने अभी तक का प्रदर्शन किया है, रानी रामपाल और उनकी पूरी टीम ने, वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, बेमिसाल और ऐतिहासिक रहा है। और इसीलिए उम्मीदें उस टीम से बहुत ज्यादा लोगों की है, देशवासियों की है, लेकिन अभी तक का जो खेल रहा है निश्चित रूप से वो भी हमारे लिए बहुत ही संतोषजनक और उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है। भारत की यात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही है। शुरुआती दबाव, शुरुआती जो नुकसान हुए या जो मैच हारे भारत की टीम ने, महिला हॉकी टीम ने 24 जुलाई को पहला मैच खेला था नीदरलैंड्स के साथ, जो कि 5 के मुकाबले 1 गोल से भारत को हारना पड़ा था। नीदरलैंड की जीत 5 गोल से हुई थी 1 के मुकाबले। दूसरा मैच जो है भारत ने 26 जुलाई को खेला था जर्मनी के खिलाफ और उसमें भी वो 0-2 से हारा था। और 28 जुलाई को तीसरा मैच अपने पूल ए में उसने खेला था ग्रेट ब्रिटेन के साथ और उसमें भी उसे हार का सामना करना पड़ा था। 0 गोल रहे थे भारत के, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन 2 गोल से अपनी जीत दर्ज करा पाया था। तो इस तरह से ये बढ़त जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। लेकिन उसके बाद 30 जुलाई की वो तारीख थी जब आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए अपने पूल में भारत ने 0 के मुकाबले 1 गोल से अपनी बढ़त दर्ज की, जीत हासिल की। और 31 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 गोल से जीत दर्ज की थी 3 के मुकाबले, और 4 में से 3 गोल वंदना कटारिया ने करके हैट्रिक जमाई थी। तो ये अपने आप में आखिरी पूल के अपने मैचों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भारत के खिलाड़ियों ने किया था और उसी का नतीजा था कि क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में 2 जुलाई को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था। एक बहुत मजबूत टीम थी, लेकिन 0 के मुकाबले 1 गोल से अपनी बढ़त बनाकर जिस तरह से 22वें मिनट में गुरजीत के गोल के साथ भारत ने जीत दर्ज की थी, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक था, बहुत उल्लेखनीय था, बहुत महत्वपूर्ण था। और वहीं से भारत की उम्मीदें बढ़ी, भारत से अपेक्षाएं बढ़ी और भारत के खिलाड़ियों में जो एक जोश, एक जज्बा जीतने का है, वो साफ साफ दिखाई देता है। सुजय। Yes, that is the story of how India is in the semi-finals, writing and rewriting history. These fantastic brigade of the Indian team. Let's now look at Group B, where Argentina came through into this competition. Let's remind you, the top team of Pool B was Australia, who has been defeated by India. Australia had won all their 5 matches against Spain, Argentina, New Zealand, China and Japan, and had scored 13 goals, and there was only 1 goal conceded by Australia in their group matches. And to beat that team in the quarter-final game is a big achievement for the Indian Eves right there. 13 goals Australia had scored and conceded only 1. And in the next knockout competition, they are shown the exit doors by a team which is not even in the top 5. And as far as Argentina is concerned, they had their first match in the league matches on the 26th of July against China, which they won 6-0. Then on 26th, they had on 26th of July, Argentina played Spain and they won that match 3-0. And in their second match, Argentina was up against China, which they won 3-2 in that match. That was on the 28th of July. Goralzani and Janankas scoring there, and Goralzani scoring
a brace over there in the 18th minute and the 24th minute. The next game on the 29th of July was against Japan, and Argentina won that by a scoreline of 2-1, where Gorlazani scored once again in the 10th minute and Zranato scored in the 45th minute. New Zealand went on to play their next match on the 31st of July, their last match in the Pool B encounters, which they lost to Australia by a scoreline of 2-0. Australia's Fitzpatrick and Chocker were the scorers of those goals, and Argentina qualified for the quarterfinals as the third best team behind Australia and Spain. We really have to be giving a little bit more credit, as much as credit as we can, to the Indian girls who have really rattled the big names as far as women's hockey is concerned. Their next game, which was against Australia, that one solitary goal was sweet success as far as India is concerned, but that fairy tale story needs to continue here now, because they're up against Argentina here in this semi-final match, and the scoreline is 1-1. And in the second minute was a crucial opener and a rocker of a penalty corner coming in from the India number 2 player who has the number 2 jersey, Gurjeet Kaur, who scored her second goal. And she has been absolutely good. She's been playing 87 times she's played for Team India, has scored 60 times for the Indians, especially through the penalty corners. Comes in from Amritsar, was a part of the Indian team in the 2017 9th Women's Asia Cup, where the Indian team played out a brilliant goal and beat Japan in Japan with 8 goals to Gurjeet Kaur's credit. A silver medal in 2018 Asian Champions Trophy, a silver medal in the 2000 Asian Games, and then she was the top scorer also in the 2019 gold medal winning FIH Women's Series final, which was played in Japan. And then in 2019, they were playing in the Olympic qualification games at Bhubaneswar when they beat USA by a scoreline of 6-5. The first match against USA, India won comfortably, but the next match was a reversal of fortunes. But here, since they've played so many times on this turf, there's also this academic thing as far as the technical development of the hockey turf. There's a new turf which is being laid out specially, introduced for the first time in hockey history. This turf is being manufactured thanks to the Japanese technology. The whole world so well knows about Japan and their technological advancement. This is 15% faster than the traditional turfs which have been used in hockey till now. So the game is fast. Players will be tiring faster. The role of rotation is also going to be very important as far as the think tanks and the coaches on the sidelines. आपने भुवनेश्वर की बात की तो सुजय मुझे ये याद आया क्योंकि आज इस समय जो भारतीय महिला हॉकी टीम या पुरुष हॉकी टीम है उसके स्पॉन्सर या प्रायोजक जो हैं वो ओडिशा सरकार ही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ओडिशा में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत ढांचा जो हॉकी को लेकर तैयार किया गया और हॉकी को लेकर एक दीवानगी, दरअसल दीवानगी थी पहले से, लेकिन उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग का अच्छा माहौल और जो बेसिक फैसिलिटीज या एमिनिटीज होती हैं उसको ओडिशा सरकार ने जिस तरह से उस पर पैसा खर्च किया, लगभग 185 करोड़ का पूरा बजट उन्होंने इस बात के लिए खास तौर पर रखा कि जो बेसिक एमिनिटीज हैं और फैसिलिटीज हैं उसको दिया जा सके। राज्य में, प्रदेश में, ओडिशा में 17 एस्ट्रो टर्फ लगाने का काम जो है बल्कि अलग अलग जगहों पर इस समय चल रहा है। और सुंदरगढ़ से जिस तरह के ओडिशा के कई प्लेयर, कई खिलाड़ी इसमें शामिल हैं और आगे बढ़े हैं, चूंकि एक अच्छी ट्रेडिशन, एक अच्छी परंपरा वहां से दिलीप टर्की हो, इग्नेस हो या बारला सुनीता लाकड़ा, वर्तमान में वाइस कैप्टन जो वीरेंद्र लाकड़ा, या दीप एक्का जो कि इस समय महिला टीम में, हॉकी टीम का हिस्सा है, वाइस कैप्टन है, वो खेल रही है। तो एक सुंदरगढ़ का अपना क्षेत्र, वहां का स्टेडियम, वहां के ट्रेनिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और आसपास के गांव में भी मैंने सुना है कि वहां बहुत ज्यादा लोग हॉकी को लेकर बचपन से ही एक आकर्षण है लोगों के मन में। And the Chief Minister himself used to be a goalkeeper for Doon School when he used to study there. And that's the reason why he really has come up. And everybody is now not just giving praise to him, but also is looking at, this is in the world, there is no state
no state in the world which has gone and sponsored a national team, and this has been revolutionary as far as Indian hockey is concerned. We mentioned about this earlier also, but since you've brought it up again, it is a fairy tale dream which is coming up true. It is no longer Alice in Wonderland. They're going to the Indian girls in Oi Stadium in Japan, the semi-final match, and all to play for. India starting off on a fantastic note by scoring through a penalty corner in the second minute, courtesy Gurjeet. The Argentinians, who are world number 2 team, they are not minnows, they are world number 2, bounced back and scored through their captain Noel Berenovio, and the two teams are now coming back onto the pitch after the halftime. It's the third quarter and all to play for. Remember, let's remind you, for those people who didn't catch the action, the semi-final, or the first one, was played earlier today, where Netherlands outclassed Great Britain by 5-1, where Albeers, Keitels and Vishroor and Malta had scored. Albeers scored a brace over there, and so the team which wins here is going to lock horns with Netherlands for the gold and silver, while the team which loses here will face off against Great Britain for the bronze medal match. सुजय, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक का जो द्वीप है उनके गांव में जनरेटर रखा गया इसलिए ताकि इस मैच को लोग देख पाए। उनके गांव के लोग इतने उत्साहित थे क्योंकि गांव में कई बार बिजली की उपलब्धता उस हिसाब से नहीं होती है। तो मध्यांतर के बाद का तीसरे क्वार्टर का खेल जो है यहां आरंभ हो चुका है। बाईं तरफ से दाहिनी तरफ अटैक करने के लिए इस समय जो टीम है वो इस समय भारत की जो टीम है वो अटैक करेगी बाईं तरफ से दाहिनी तरफ के लिए, लेकिन दाहिनी तरफ से बाईं तरफ अर्जेंटीना की टीम अटैक करने के लिए अपनी अपनी पोजीशन मध्य क्षेत्र में गेंद को लेकर भारतीय खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन वहां पर रोकने की कोशिश अर्जेंटीना की तरफ से। दाहिनी तरफ अपने साथी खिलाड़ी को उन्होंने पास दिया है और बिल्कुल उस क्षेत्र में यानी अर्जेंटीना के क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ी अपनी पहुंच बना चुके थे। बहुत ही खूबसूरती से डी के बिल्कुल बाहर गेंद को वहां पहुंचाया था, लेकिन गेंद बेस लाइन से होते हुए बाहर चली गई। बहुत ही कुशलता के साथ अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने उसे क्लियर कर दिया है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA की सलाह, शिक्षित, जागरूक एवं सशक्त निवेशक बने। विस्तृत जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-114-667 पर कॉल करें। और इस समय अर्जेंटीना और भारत के खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने, सेमीफाइनल ये दूसरा चल रहा है टोक्यो ओलंपिक खेलों में। ओई स्टेडियम में नॉर्थ पिच पर यह खेल हो रहा है। जापान में यानी टोक्यो में इस समय रात का अंधेरा अपनी चादर पूरी तरह फैला चुका है और इस बीच में इस खुले आसमान के नीचे यहां पर जो टोक्यो में जो मैच हो रहा है सेमीफाइनल का, बाईं तरफ से भारत के खिलाड़ी वहां पर गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश बहुत अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती के साथ बाएं तरफ से दबाव बना ली है। 25 गज की रेखा को क्रॉस करते हुए बिल्कुल डी के बाहर पहुंचे थे। अच्छा पास दिया था, लेकिन वहां पर नेहा ने जिस गेंद को बढ़ाया था कोई और खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था उसको नियंत्रित कर पाता। और वापस फ्री हिट। इस बीच में अर्जेंटीना के खिलाड़ी से बहुत एक भागते हुए तेजी से जो स्टिक उनके हाथ से छूटी थी तेजी से एक बार फ्री हिट अर्जेंटीना के पास। गेंद को बाईं तरफ दाहिनी तरफ से लेकर आगे बढ़ने की कोशिश ड्रिबल करते हुए तीन खिलाड़ी उनको तीनों तरफ से घेरते हुए आगे बढ़े, लेकिन भारत के पास फिर से गेंद पहुंची है और ड्रिबल करते मध्य क्षेत्र से बाहर गेंद को क्रॉस किया। दाहिनी तरफ से अटैक बनाने की कोशिश भारत की तरफ से। भारतीय खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं और उसको लेकर आगे बढ़ने की नौजोत ने कोशिश की थी, लेकिन अर्जेंटीना के
के खिलाड़ियों ने जिस तरह से उसको रक्षा की, उसकी अपने गोल पोस्ट की गेंद जिस तरह से क्लियर कर दिया था, हो गई थी और साइड गेंद बेसलाइन से होते हुए बाहर, फ्री हिट अर्जेंटीना के पास बाईं तरफ से अटैक बनाने की कोशिश, गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए मध्य रेखा को क्रॉस किया है और अब भारत के क्षेत्र में गेंद लेकर वहां पहुंच चुके अर्जेंटीना के खिलाड़ी, अकेले उसको लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए डी के अंदर भी पहुंच गई हैं, लेकिन वहां तेज हिट किया था डी के अंदर पहुंचने के बाद, लेकिन वो ना तो निशाना ठीक से लगा और वहां पर जिस तरह से उसको बचाया गया, रोका गया भारतीय रक्षा पंख के खिलाड़ियों से, वो भी अपने आप में उसके सफलता मानना चाहिए, क्योंकि एक खतरा था भारतीय गोल पोस्ट पर अर्जेंटीना की तरफ से। जिस तरह का जो डिसीजन था, अंपायर का निर्णय था, उसको लेकर अर्जेंटीना के खिलाड़ी जो है उस पर अपना एतराज उन्होंने व्यक्त किया। Well, yes, there's a referral going up there, and the team referral taken up by Argentina, saying that that opportunity where it was a cross. I told you time and time again that the number 7 Agustina Albertario is the danger player. She probably could, even go across and challenge Usain Bolt, for the pace she runs with the ball with is incredible. She centered the ball and her own players could not get that opportunity, and she's challenging for the fact that the ball hit the foot of Grace Ika, and if that comes true and if that is considered to be deliberate, there could be an opportunity for Argentina to earn a penalty corner there at the moment. And the video referees are also looking up at the moment, and anxious faces, also the giant screen at the Oi Stadium, and there is that referral which has been turned down. Argentina, or is it a moment? Let's have to have a look. There are people who are actually looking up, and there's still a state of confusion because players are still objecting to what this is. And the umpire is calling the players back and saying that this is not going to be something that she's going to entertain. The sport has got to be played in the first and foremost thing, which is sportsman spirit. You play the game with the spirit of the game and reflecting the sense of appreciating the rules and the people who govern the rules of game. And that referral now has been rejected. Now Argentina lose any right to object or question the judgment of the umpires on the pitch. So India still has that to their advantage, Janendra. बिल्कुल, और इसलिए एक निश्चित रूप से अर्जेंटीना के लिए एक बड़ी चुनौती, क्योंकि उसकी अपनी एक जो जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में रही है, उसके अनुरूप उसकी उपलब्धि के लिए वो जी जान लगाएंगे। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने भी जिस तरह से इस समय पूरी कोशिश, पूरी जान लगा रखी है इस बात के लिए। इस समय भारत के पास गेंद, शर्मिला बाईं तरफ से गेंद को ड्रिबल करते हुए आगे बहुत तेज गति से लेकर आगे बढ़ रही हैं। वहां अर्जेंटीना के खिलाड़ी पैरेलल उनके समानांतर चलते हुए गेंद को छीनने में कामयाब हो गए। अर्जेंटीना के पास गेंद पहुंच चुकी है और अर्जेंटीना वापस उसी दाहिनी तरफ से ही अटैक बनाने की कोशिश करता हुआ गेंद को आगे बढ़ाया और आगे लेकर
बढ़ते हुए दाहिनी तरफ से, लेकिन वहां जिस तरह से फाउल हुआ अर्जेंटीना के खिलाड़ी से, शर्मिला। एक बार फिर से अर्जेंटीना ने बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, डी के बाहर अपने क्षेत्र में पैरेलल पास, बाईं तरफ बढ़ा दिया गेंद को, बाईं तरफ से फिर वापस उसी खिलाड़ी के पास जहां से पास ओरिजिनेट हुआ था। अब एक बार दाहिनी तरफ अपना पास दिया है और दाहिनी तरफ से गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए वहां अर्जेंटीना के खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बीच में भारतीय खिलाड़ियों ने इंटरप्ट करने की कोशिश की, गेंद को नियंत्रित करने की कोशिश की। फिर से अर्जेंटीना के पास गेंद बिल्कुल मध्य रेखा के आसपास, गेंद को आगे ड्रिबल करते हुए, लेकिन रक्षा पंक्ति वहां मजबूत दीवार की तरह खड़ी, गेंद को पीछे दिया, बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को अपने ही क्षेत्र में, और बैक पास पैरेलल पास देते हुए दूसरे साइड में दूसरे फ्लैंक पर गेंद को लेकर गए, वहां से स्कूप किया, गेंद को हवा में अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहते थे, लेकिन वहां दीप मौजूद थी, गेंद को उन्होंने अपनी स्टिक पर नियंत्रित किया और गेंद को नियंत्रित जरूर किया, रोका जरूर, लेकिन जब ठप्पा नीचे गेंद गिरी उस समय गेंद जो है उसके बाद अर्जेंटीना के पास पहुंच गई उनके नियंत्रण में। लेकिन एक बात तो जाता है कि अभी तक जो स्थिति है वो पोजीशन की अगर हम बात करें तो लगभग बराबर दोनों टीमों का रहा है, और भले अर्जेंटीना के पास पेनल्टी कॉर्नर ज्यादा मिले हैं, भारत को कम मिले हैं, लेकिन यह कि स्कोर बोर्ड जो है वो वही है, 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें। और इस समय एक बड़ा एक बार फिर से ये तनाव भरे क्षण है। Penalty corners now being given, and that is the pressure, because now there's a little bit of rotation. Valentina Costa is now come in, the number 32 for Argentina side, and they really have put in that pressure. She hugs that right flank, and that cross that came in over, and really was very hard. The Indian players really were struggling to keep pace with her brilliant run. So they got two very fast runners on the right side. In number 7 is Agustina Arbitario, and on the near side, very close to us, is the Valentina Costa in the number 232 jersey. Penalty corner opportunity now going in straight. The rusher comes out, saves it over. Hands being raised, attempting and appealing for a penalty corner. And that is what happens. And Graceka raised her hands sportingly. You know, that is... Look at the effort. You know, the umpire comes up and gives Graceka a pat on her back for her honesty, saying that yes, the ball hit her leg. The Indian sporting spirit is shining bright here, and we really have to get more goals in. At the moment, penalty corner number 2 in succession, and this time does it go in? There is a deflection, and the Indian goalkeeper Sarita Punia dived to her right. The Indians are looking to go in for a referral, and the deflection beat the Indian goalkeeper and went inside the Indian goal. But dangerous play, probably. Is that a referral, or is the umpire herself going up for a umpire
umpire's referral. जी जी बिल्कुल, अंपायर ने ही रेफरल मांगा है क्योंकि उनको कुछ संदेह है, कुछ शुबह है इस बात को लेकर कि कुछ खतरनाक तरीके से गेंद को उठाया गया और जिस रूप में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई उसको लेकर उन्हें कुछ संदेह है और इस वीडियो रेफरल के बाद एक निश्चित रूप से लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर अर्जेंटीना के पक्ष में आना भारत के लिए एक दबाव की स्थिति उससे पैदा जरूर होती है, लेकिन एक बात तो है कि अभी तक भारत जिस तरह से दबाव के बीच भी खेला है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो उसको देखते हुए इस बात की उम्मीद की जा सकती है। तीसरा जो क्वार्टर चल रहा है यानी मध्यांतर के बाद का तीसरे क्वार्टर का खेल जो है वो इस समय जारी है और उस खेल में लगातार जो दूसरा पेनल्टी कॉर्नर अर्जेंटीना को मिला था उसकी वजह से कुछ उसको डाउट जो हुआ है अंपायर की तरफ से उस बात को लेके यहां नोएल बारिनो जो कि कैप्टन है अर्जेंटीना की टीम की, वो अपने खिलाड़ियों से चर्चा करते हुए निश्चित रूप से सभी के चेहरों पर तनाव है, चाहे वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हो चाहे वो भारत के खिलाड़ी हो। Yes, Noel seems to be the player who has taken that opportunity of giving the world ranked number 2 team the lead here in the third quarter. And it's very, very crucial that how this is going to be interpreted from the video referee. They're taking a lot of time, so it means that it's a very close call, and you know, the number 27 who really had that push on that ball was the captain, Noel Beranivo, who is 37 years of age, 351 caps for Argentina, and has scored 183 goals till now. So she is no novice. She knows what to do, when to do, and how to do, because they play it at the moment, and there is that opportunity, and the goal has been signaled. Argentina have moved up and have got a lead through that penalty corner. The captain coming in over and trying to do her best, and she delivered. A little bit of a problem for the Indian defenders as the ball did rise, and was a little bit of worry for the umpire also, who really went in for that referral. But the decision comes in from the video umpire saying that the goal is good, and Argentina, who were Olympic silver medalists in Sydney and in London, are now having a 1-goal cushion against India.
Argentina 2, India 1. The semi-final game for the women's hockey match being played here at the OI Stadium. The Indian players hugging on and trying to push in a little bit more pressure, and at the near side, this is going to be Agustina, who has got a 1-2 play, trying to combine well with her defender, Julieta Janukas, and the Indian team, fortunately, in trying to run them out, has been playing it over to Sharmila Devi. The Indian forward, who is 19 years of age, has played for the country 9 times till now and has scored only 1 goal for Team India. Is trying to do a little bit more. The ball goes off her touch over the sideline, right below the sideline, close to the commentary box, and a little bit of worried faces also for the Dutchman Indian coach. So Marine, and the Argentinian players would also try to use all their skills and maturity in trying to run that clock down, scoop that ball high. Neha was right there, lifted the stick up in trying to control and bring that ball down. Dangerous play signaled against her, and blowing that whistle is the umpire from New Zealand. Circle penetration now. Look at the pressure that the Argentinians have put. 13 in favor of them, 6 in favor of India, and once again it is going to be that danger person who just seems to run on. Argentina, Alberto. So she comes in over, single-handedly runs in over. The clinical thing about technical hockey is that, she keeps the ball on one side and the opponent on the other. So that's the reason why the opportunity to stealing the ball, which is in terms of technical language in hockey, is called man side and ball side, is the awareness and the tactical and skill ability of this player is absolutely fantastic. Number 17, Rocio Sanchez, plays in midfield 33 times. That she has played for her country. Is also 33 years of age. Moving in from the central midfield position, playing it all the way back from the right, now playing in as the winger position. Good run once again from Maria. Dispossessed now very well by Neha. Neha plays it now, looking for Navjot. Navjot being pushed at the moment in
the central position, and that's an obstruction foul. That is a professional foul, mind you, that the New Zealand, that the Argentinian players, and she is one of those players who plays in the New Zealand club of San Mateo. Vandana, she's got to get into the action right now. She scored an important hat-trick for Team India there. And can she come up and put her name onto the scoreboard? The Indian team needs her. The scoreboard, as far as Indian fans need her to do that. And we'll have to wait and watch the third quarter in progress here. Argentina, the world number 2 silver medalists of the Olympic 2 times, and bronze medalists also twice in Athens and Beijing. Can they come up, and can they beat this formidable world number 2 side? The Indian team has been really putting on that pressure, but will that be coming on in the form of a goal? Playing it all the way back. Possession hockey now. Possession hockey from the Argentinian women. They're having 3 players back in their defense, and they are on the rightful back is on the right side of the end. The left full back is on the left side of the end. And the sweeper is right in the middle, so there is a great amount of distance. So moving the ball from left to right and right to left is not a problem for them. Neha seems to have caught up a little bit of more attention for her. Purposeful infringement has been asked to have a little bit of a warning, harsh words spoken to her, and that's once again the sweeper back in defense. Valentina Raposo, she gets the ball back once again, now plays it all the way back to her captain Noel Berenivo, who is playing as the left fullback at the moment. Deepika is trying to go in and consolidate because she is a very powerful player. The number 7, the fast runner, Agustina Albertario. Neha being shown that card has been
asked to be sitting on the sidelines for quite some time. So India now will be playing 10 players against Argentina's 11. जी, और इस समय अर्जेंटीना के क्षेत्र में गेंद वहां पहुंची है, उसे नियंत्रित करने की कोशिश। एक बार फ्री हिट अर्जेंटीना को मिला बिल्कुल मध्य रेखा के, लेकिन इस बीच में अंपायर का इशारा। खेल पर जो तेजी और जो एक दोनों टीमों की तरफ से अपनी तरफ से लगातार ये कोशिश की कहीं कुछ बढ़त बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए, क्योंकि अर्जेंटीना इसके अंतर को और बढ़ाना चाहता है। भारत इस समय 1 गोल और अर्जेंटीना 2 गोल से आगे, यानी 1 गोल की बढ़त उसने अपनी बना ली है भारत के पोजीशन में। भारत के नियंत्रण में गेंद, वहां शर्मिला लेकर गेंद को आगे बढ़ना चाहती थी, बिल्कुल बाएं फ्लैंक से। वहां सलीमा टेटे के पास गेंद है। सलीमा ने साइड लाइन के बिल्कुल पास गेंद को रखकर ड्रिबल किया, उसके अपने साथी खिलाड़ी को दिया डी के बाहर। अर्जेंटीना के गेंद को अभी भी भारत के नियंत्रण में, डी के अंदर गेंद को पहुंचा दिया था और नेहा उसको गेंद को लेकर हिट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्लियर हुआ और इस तरह से एक बार फिर से गेंद साइडलाइन से होते हुए बाहर निकल गई और गेंद को पोजीशन करने के बाद रानी रामपाल इस समय बाहर हैं। रानी रामपाल या कोच मरी ने दोनों के चेहरों पर जो एक चिंता का भाव जरूर है, और इस अंतर को कम करने का, खत्म करने का, बल्कि कम तो नहीं बल्कि इसको खत्म करने की कोशिश भारत की तरफ से लगातार जारी है। लेकिन अर्जेंटीना की एक मजबूत टीम जो है, दुनिया की मजबूत टीमों में से एक टीम, वो इस समय मैदान में है। भारत के खिलाफ खेल रही भारत और दोनों ये टीमें एक दूसरे के खिलाफ है। भारत के पास गेंद इस समय बाईं तरफ से गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा उठी। पोजीशन की अगर हम बात करें तो इस समय अर्जेंटीना 52% का पोजीशन लेकर थोड़ा सा आगे जरूर है। 48% का पोजीशन जो है, प्रतिशत का इस समय भारत के पास। भारतीय खिलाड़ी वहां पर गेंद को दाहिनी तरफ से ड्रिबल करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी नेहा, और लेकिन अर्जेंटीना के पास एक बार फिर से गेंद उसके नियंत्रण में, अपने बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को बाईं
तरफ से उसे क्लियर करके उस क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश वहां पर है अर्जेंटीना की, लेकिन उससे फाउल हुआ भारतीय रक्षक पंक्ति के खिलाड़ियों से, और अर्जेंटीना एक बार फ्री हिट के लिए। Investor Education and Protection Fund Authority IEPF suggests being an educated, empowered and smart investor. For more details, call on the toll-free number 1-800-114-667. और अब गेंद जो है वो दाहिनी तरफ पहुंच की, दाहिनी फ्लैंक से गेंद को लेकर आगे बढ़ने की पोजीशन करने की और उसे मूव करने की कोशिश भारत की तरफ से थी, और वहां पर भारतीय खिलाड़ी जो मौजूद थे, लेकिन इस बीच में अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने गेंद को अपने नियंत्रण में ले लिया। स्कूप किया है और भारत के क्षेत्र में गेंद बहुत दूर उसे अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहते थे, लेकिन हवा में ज्यादा गेंद तेजी से उछली और इस तरह से अंपायर के विसल, उसकी सीटी और उसका इशारा, फ्री हिट भारत के लिए। भारत गेंद को पोजीशन करते हुए भारतीय खिलाड़ी और दबाव तनाव जो दोनों तरफ नजर आता है, तेज हिट किया था गेंद को, लेकिन अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने बीच में इंटरप्ट किया, स्टिक को हवा में उठाते हुए गेंद को अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन बाईं तरफ से फिर से उसे आगे बढ़ने की कोशिश और अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया है, लेकिन यहां अंपायर का इशारा फाउल हुआ और एक बार फिर से फ्री हिट अर्जेंटीना के पास। गेंद को पोजीशन किया मध्य रेखा के बिल्कुल पास में, बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को और एक बार जगह बनाते हुए कोशिश करते हुए एक साइड लाइन में बाईं तरफ बाएं फ्लैंक से गेंद को पोजीशन करके तेज हिट दिया, पास दिया, लंबा पास था, उसे दूसरे छोर पर अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहते थे, लेकिन वहां मारिनो मौजूद तो जरूर थी, लेकिन उस गेंद को नियंत्रित नहीं कर पाई और बिल्कुल दूसरे छोर पर बेस लाइन से होते हुए गेंद बाहर चली गई, बाउंड्री लाइन से बाहर। इस समय गेंद को ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन गेंद को क्लियर करने की कोशिश की, साइड लाइन से बाहर गेंद निकल गई अर्जेंटीना के खिलाड़ी से, फ्री हिट भारत को। फिर से दीपा के पास गेंद, उन्होंने गेंद
को हिट किया, आगे किया, लेकिन अर्जेंटीना के खिलाड़ी के पैर से टकराई और इस तरह से वो फाउल हुआ। एक बार फ्री हिट के बाद बाईं तरफ से कोशिश की, सलीमा ने गेंद को बहुत तेजी से ड्रिबल करते हुए तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अर्जेंटीना के खिलाड़ी रोका। वहां तेज हिट किया उन्होंने, अपने साथी खिलाड़ी को डी के अंदर देना चाहती थी, लेकिन गेंद को अर्जेंटीना के रक्षा पंख के खिलाड़ियों ने क्लियर किया है और तेज हिट दिया, साइड लाइन से बाहर गेंद निकल गई थी, इसलिए हिटिंग के लिए भारतीय खिलाड़ी वहां पर मौजूद और पोजीशन किया मध्य रेखा के बिल्कुल पास में अर्जेंटीना के क्षेत्र में। भारत ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश, डी के बिल्कुल बाहर पहुंच चुके हैं, हिट करने की कोशिश वहां पर डी के अंदर लेकर पहुंचे जरूर थी, लेकिन रक्षा पंक्ति अर्जेंटीना की वहां मुस्तैद बिल्कुल गेंद को नियंत्रित किया और क्लियर भी कर दिया है उसे, और मध्य रेखा के बिल्कुल पास अपने साथी खिलाड़ी के पास पहुंचा दिया। वहां साइड लाइन से गेंद बाहर गई, एक बार फिर से फ्री हिट भारत के लिए, हिट इन के लिए। बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को और बैक पास के बाद